Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in this video we discuss about the game theory problem. So in the game theory we have the two-person and zero-sum game problem with a saddle point. So let us discuss one by one what is meant by two-person and zero-sum game problem with a saddle point. So first is the classification of game. So all the game theory problems are classified into the two types. First is a pure strategy game and second is a mixed strategy game. So the method for solving these two types varies. By solving a game, we need to find the best strategies for both the players and also to find the value of the game. Okay, so if we have to solve this type of game, like pure strategy game problem or mixed strategy game problem, for that we need to find out the best strategies for the both the players, and based on this best strategy we have to find out the value of the game. So pure strategy game can be solved by using the saddle point method. Okay, so if we are having the pure strategy game problem, so in that case we are using the saddle point method. So for the pure strategy game, so next is what mixed strategy game. So in the mixed strategy, we have the different methods are used. The first method is the analytical method, graphical method, dominance rule, and simplex method. Okay, if you are having the pure strategy game, so in that we are using the saddle point method. But if you are having the mixed strategy game, so in that case we are using the analytical method, graphical method, dominance rule, and the simplex method. So in this video, we discuss about the pure strategy problem. Okay, so the pure strategy problem is called as a two-person and zero-sum game problem. So in that we are using the saddle point. So let us discuss this problem. So if you are having the two-person zero-sum game, may be deterministic or probabilistic. Okay, so games are is in the form of deterministic or in the form of probabilistic. So the this two-person game zero sum problem is a deterministic or a probabilistic type. So the deterministic game will have the saddle point and pure strategy exist in such game. Okay, if you are having the saddle point in this two-person and zero sum, so this is called as a deterministic game. Okay, but if you are having uh, uh, the mixed strategy game, so in that case we are not using the saddle point, so this is called as a probabilistic game. So if a rectangular game have a saddle point, the two players cannot use the pure strategy, so in that is we can call it as a maximum or minimum criteria of a optimality. So in contrast, if you are having the probabilistic game, we'll have no saddle point. अगर अगर हम डिटर्मिनिस्टिक टाइप प्रॉब्लम है, सो वहाँ पे हम सैडल पॉइंट यूज कर सकते हैं. बट अगर हमारा प्रोबेबिलिस्टिक गेम प्रॉब्लम है, सो इन दैट केस वी आर नॉट यूजिंग द सैडल पॉइंट, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्स स्ट्रेटेजी. So here the probabilistic games will have no saddle points and mixed strategies are taken with the help of probabilities. Okay, so here we discuss about the two-person and zero-sum game problem by using the saddle point. So first we discuss what is meant by saddle point or a definition of saddle point. So the saddle point of a matrix is the position of such an element in the payoff matrix which is minimum in its row and the maximum in its column. Okay, in the saddle point we have a payoff matrix. Okay, so what is the payoff matrix? This is the m by n matrix. We are having m number of rows, n number of columns. So in this matrix we have to find out the minimum row value and maximum column value. Okay, so by using this minimum and maximum row column value we get one saddle point. So how to find out the saddle point? So there are different procedure is present. First step is what? Select the minimum element of each row. हमें क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स है उसमें हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है. So minimum element of each row of the payoff matrix and mark them with the circle. So हर एक रो में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हमें सर्कल मार्क करना है. The next step is what? Select the maximum element of each column of the payoff matrix and mark them with the square. The next step is what? Maximum element. हर एक कॉलम में से हमें
मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है और उसको क्या करना है, स्क्वायर मार्क करना है. So next is if there appears an element in the payoff matrix with a circle and a square together. So हमें क्या हर एक रो में से मिनिमम एलिमेंट मिलेगा, हर एक कॉलम में से हमें स्क्वायर मिलेगा. सो जो वैल्यू सर्कल और स्क्वायर दोनों ही मार्क किया हुआ दिखता है, हर एक जो एलिमेंट को स्क्वायर भी दिख रहा है और सर्कल भी दिख रहा है. सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज अवर सैडल पॉइंट. Okay, so if there appears an element in the payoff matrix with a circle and a square together, then that position is called as a saddle point and the element is the value of the game. So जो भी saddle point है उसकी value जो होगी उसको क्या बोलेंगे, value of the game. Okay, so this is the saddle point. And what is the payoff matrix? So here, as I said, in the saddle point, we have one payoff matrix, and based on this payoff matrix, we can find out the minimum row value and maximum column value. So what is the payoff matrix? Suppose we have the player A has a m activities and player B has a n number of activities, that is m rows and n columns. M rows for player A, n columns for player B. So then the payoff matrix can be formed by adopting the following rules. So first we have to generate the row designation for each matrix. Are the activities available to player A? And for the column designations for each matrix, are the activities available to the player B? So जो भी सेल होगा हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है फॉर रो एंड कॉलम. So sale entry, that is Vij. Here we are using the matrix representation of m by n. So here Vij is the payment to player A in A's payoff matrix when A chooses the activity I and B chooses the activity J. The next is with a zero-sum two-person game. The sale entry in the player B payoff matrix will be negative of the corresponding sale entry Vij in the player's A's payoff matrix, so that the sum of payoff matrices for player A and player B is ultimately 0. So this is the concept of a payoff matrix. So based on this payoff matrix and saddle point, we can find out the optimal strategies and the value of the game. So solution of games with the saddle point. अगर हमें ये वाला problem को with saddle point से solve करना है, so in that to obtain a solution of a game with the saddle point, it is feasible to find out. So feasible solutions हमें find out करना है. So उसके अंदर best strategy for player A होना चाहिए, best strategies for player B होनी चाहिए और the value of the game होना चाहिए. So we have to find out the optimal strategies for player A and player B with the value of the game. So the best strategies for player A and player B will be those which correspond to the row and column respectively through the saddle point. Okay. So in this two-person zero-sum problem, the zero-sum game, the pure strategies of two players constitute a saddle point if the corresponding entry of the payoff matrix is simultaneously a maximum of row minimum and the minimum of column maximum. So this decision making is referred to as a minimax and maximum principle. Okay. So in that we have to find out the row minima and maximum and column minima of a column maximum. So this is called as a minimax maximum principle to obtain the best possible selection of a strategy of the players. So in the payoff matrix, the minimum value in each row represent the minimum gain of a player A. Okay. So here player A के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, रो, और player B के लिए हम यूज कर रहे हैं कॉलम. सो अगर हम पे ऑफ मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, सो हर एक रो में से जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसको बोलेंगे मिनिमम गेन फॉर द प्लेयर ए. Okay, and the player A will be select the strategies that given him the maximum gain along or gain among the row maximum values or row minimum values. So the selection of strategies by player A is based on the max mean principle. Okay, selection for the row is what? Max mean principle.
Similarly for B also, similarly for payoff is loss for player B. So in the player B we require the column is a maximum column value. So similarly the payoff is loss for player B. So the maximum value in each column, column B, column में से हम क्या find out कर रहे हैं, maximum value find out कर रहे हैं. So maximum value in each column represent the maximum losses for the player B. ओके, सो कॉलम में से जो भी मैक्स वैल्यू मिलती है हमें उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लॉस फॉर प्लेयर बी. So player B will select the strategies that gives him the minimum loss among the column maximum value. So which is called as the min max principle. Okay. So for the player B we get the min max principle, and for the player A we get the max min principle. So the selection strategy for the player B based on the min max principle. So if the max min value is equal to the min max value, so जो वैल्यू हमें गेट होगी रो वैल्यू से और जो वैल्यू हमें मिलेगी कॉलम वैल्यू से, सो बोथ आर इक्वल्स होंगे. So that we can call it as a saddle point. Okay, if the maximum value is equal to min max value, the game has a saddle point, that is equilibrium point. So thus the strategies selected by player A and the player B are the optimal strategies. Okay. So let us discuss one example based on this 2% and zero sum game with the saddle point. So we have one example. Solve this example by using the payoff matrix. So here we have one matrix. We are using the player A for the row and player B for the column. Okay. So यहाँ पे 4 rows दिए, 3 and 4 rows है, और columns कितने हैं, 5 columns है, 1 2 3 4 and 5. तो ये वाले प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय यूजिंग सैडल पॉइंट. तो सैडल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी रो की वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो भी कॉलम्स है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो भी वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या होगी, सैडल पॉइंट होगी. सो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन. फाइंड आउट द रो वैल्यू. सो ये हमारा फर्स्ट रो है. सो इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -2. सो अगर मिनिमम वैल्यू होती है सो हमें क्या करना है, उसको सर्कल करना है. सिलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ द पेऑफ मैट्रिक्स एंड मार्क देम विद द सर्कल. सो यहाँ पे -2 0 0 5 3 उसमें से मिनिमम कौन सा है, -2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2. सिमिलरली फॉर सेकेंड रो ऑल्सो 3 2 1 2 2. सो इसमें से मिनिमम कौन सा है, 1. सो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे. देन -4 -3 0 -2 -6. सो इसमें से मिनिमम कौन सा है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है. सो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू मीन्स our small value, that is -4. So here we get the -4. 5 3 -4 2 -6. So most negative कौन सा है, -6. So यहाँ पे हम लिखेंगे -6. So ये हो गया हमारा रो के लिए. So कॉलम में से हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ईच कॉलम. So -2 3 -4 5. So max value is what, 5. Similarly from this second column we get the 3. From third column 0 1 0 -4. The most maximum value is what, 1. 5 2 -2 2. Maximum value is what, 5. 3 2 6 and -6. So maximum value is what, 6. ओके. सो यहाँ पे हमें रो में से हमें मिनिमम वैल्यू मिली है और कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू मिली है. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्स मिन वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फ्रॉम दिस ऑल द रो वैल्यूज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, -2 1 -4 -6. So max value is what, 1. So this is the max-min value from the row or for the player A. Similarly from this 5 3 1 5 6. So जो मैक्स वैल्यूज है कॉलम में से उसमें से हमें मिनिमम चाहिए. रो में क्या था, जो भी मैक्स मिनिमम वैल्यूज है उसमें से मैक्स चाहिए, बट इन द कॉलम जो भी हमारे मैक्सिमम वैल्यूज है उसमें से हमें मिन मैक्स वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे मिनिमम कौन सा है, 1. So ये भी 1 है और ये भी 1 है. So here the saddle point is what, 2 3 from player A 2, from player B 3.
So this is our saddle point where we get the circle and square. Okay, so saddle point क्या होता है? If there appears an element in the payoff matrix with the circle and the square together, then that position is called as the saddle point. और जो भी saddle point की जो value होती है उसको क्या बोलेंगे? Value of the game. See here, saddle point की value क्या है यहाँ पे 1. तो value of the game is what? 1. So player A के लिए possible strategy कौन सी हुई? 2. और player B के लिए possible strategy is what? 3. Okay, and value of the game is what? 1. So this is the 2% zero sum game problem with the saddle point. So let us discuss another example. So here we have 3 rows and 4 columns. For player A we have 3 players. For player B we have 4 players for the column. So again we can solve this type of problem by using the saddle point. So हर एक रो में से हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम वैल्यू. सो 1 7 3 4 मिनिमम इज व्हाट 1. 5 6 4 5 मिनिमम वैल्यू इज व्हाट 4. सो रो में से हम क्या कर रहे हैं? सर्कल डिनोट कर रहे हैं, सर्कल मार्क कर रहे हैं. 7 2 0 3 मिनिमम इज व्हाट 0. सो सर्कल क्या है? हमारे रो के वैल्यूज है. अगेन फाइंड आउट द कॉलम वैल्यूज. सो कॉलम में क्या चाहिए? मैक्स वैल्यू चाहिए हमें. सो फर्स्ट कॉलम इज 1 5 7. सो इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? 7. सो 7 को हमने क्या किया? स्क्वायर किया. देन अगेन फॉर द B2 7 6 2 मैक्सिमम कौन सा है? 7. 3 4 0 मैक्सिमम कौन सा है? 4. एंड देन 4 5 3 मैक्सिमम कौन सा है? 5. सो रो में हमें क्या मिले? मिनिमम 3 वैल्यूज मिले हैं 1 4 0. और कॉलम में हमें क्या मिले? मैक्सिमम 4 वैल्यूज मिले 7 7 4 5. सो फ्रॉम दिस वैल्यू फॉर द रो वी कैन फाइंड आउट द फ्रॉम दिस मिनिमम वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू. सो 1 4 0 में से मैक्सिमम कौन सा है? 4. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. एंड फ्रॉम दिस 7 7 4 5 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 4. सो ये जहाँ पे हमारा सर्कल भी दिख रहा है, स्क्वायर भी दिख रहा है, सो उसे हम बोलेंगे सैडल पॉइंट. एंड द वैल्यू ऑफ और एलिमेंट ऑफ दिस सैडल पोजीशन इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ द गेम, दैट इज 4. तो ये वैल्यू हमें कहाँ पे मिली है? फॉर प्लेयर ए में से A2 के लिए और प्लेयर बी में से B3 के लिए, प्लेयर B3 के लिए. Okay, so this is the second example based on the 2% zero sum game problem with the saddle point. Okay, thank you.